Good morning, dear student and concerned teachers present in the class. Welcome to this live class from Virtual Studio, District Education Office, Sundargarh. Dear student, I am Bijay Sankar Sahu, your English teacher, going to teach this session English subject with other teachers. They are going to also mentor you. They are also going to guide you along with me. Dear student, we know English is an international language. It is a foreign language which dominated the world. It is so popular. In our country also, it is officially used in every works. So English is the official language in our country, and it is placed as the second language. Just we learn in our school as second language, that is English, SLE. Dear student, before going to learn the various content of your book, whatever it is there in English portion, we this time, especially this April month, we are going to clear all your doubts regarding the basic things, whatever it is there related to grammar of this language. Dear student, grammar, you know, the particular branch of study of a particular language which help us to read, write, speak, understand a particular language. So English grammar also very important for us, and we must learn it to understand, to read, to write, to speak proper English. So dear student, before me, one of your favorite teacher, Jyoti Prabha Miss, also taught you regarding the particular part of a speech, that is noun, in our last class. So after that, whatever the next concept related to noun, I am going to teach you today. So without much wasting our time, let's proceed towards the smartboard and explore student lesson. So dear student, you can able to find what I am going to teach you today. So before that, in the last class, Jyoti Prabha ma'am has taught you how to identify noun and the category of noun along with pronoun. So out of that, she has given you the particular homework part. So I have with the solution of those homeworks, whatever she has given to you in her last class. So this was the particular slide has given to you. You have already solved, I think, the particular part. So let's proceed. Let's check whether you have correctly answered the questions, whether you can able to find the nouns or pronoun from the passage. So let's verify. Okay, so you can able to found here, Ramu was a blind old man. One night he came out of his hut. He walked along the road. He had a lamp on his hand. A young man saw Ramu. He came to him and said, Ramu, you are blind. You are foolish also. You cannot see, but you are carrying a lamp in your hand. Ramu smiled and said, this lamp is not for me. It is for you and others. They see the lamp and do not knock against me. Dear student, the particular part which I have colored, you can able to find in this particular passage. One part I have color in sky color, another part I have color in red color. So the particular part which is in sky color, that is particularly we can say that noun. So Ramu, man, night, hut, road, these are the particular noun in this particular passage. So verify the answer and you just check whether you have correctly identified those nouns from this particular passage. So next to it, pronouns. The pronouns are he, his, him, you, your, me, others, they. Okay, so I think this part you have done. Okay, dear student, so next particular slide I'm going to proceed, because you might have already done this and you are going to check it. So I think it will only take very less particular minutes to you. So I think you have done it. So shall I proceed to the next slide? Yes, I'm moving. So student from different school, you can also participate
here, as this particular translation has given to you in the last particular class. So what you have done, you just check yourself, and I am with your answer also. So Ramo Babu jane shikyaka. Translate these particular statements into English. Ramo Babu jane shikyaka. So what the answer you have written? Any school you can answer. Raise your hand, and you are going to answer it also. Student from various schools, you can raise your hand. I'm going to ask you. You can also participate in this process. Yes. Ram Babu is a teacher. Yes, you can write Ram Babu is a teacher. Very good. You can write Ram Babu is a teacher, or you can write Mr. Ram is a teacher. Very good. So Mr. Ram is a teacher, or Ram Babu is a teacher, whatever you can write. So Mr. Ram is a teacher. Very good. Have you seen? Next to it, Ambo gotiye phalo. Who can translate it? Ambo gotiye phalo. Mango is a fruit. Mango is Mango is a fruit. Very good, very good. Mango is a fruit. So the particular name it is there. As person name we just write in English the particular matra you use. Ramo means Ramo, but here as it is word, so ambo ko ame kon lekhiba? Mango lekhiba. Iti ame ambo lekhibani, iti ame mango lekhiba. So mango is a fruit. Very good. You have answered correctly. Next, eha moro kolamo. What you have written? This is my pen. This is my pen. So here you can use two pronouns. One you can use this, another one you can use it. So this is my pen, or it is my pen you can use. Next, Semankar na Hari, Govinda, O Gopala. What you have mentioned? Answer to this. Their names are Hari, Govinda and Gopal. Very good. Their names are Hari, Govinda and Gopal. Very good. You have answered well. Next, Semane Chhatro Atanti. What do you have answered? They are students. They are students. Very nice. Very nice. The particular answer you have also given here correctly. So all the particular translation, whatever the task it is provided to you, you have answered correctly. Right now, the fill in the blanks part where you have to put different pronoun like my, your, his or her. So what you have done, whether you have correctly mentioned the answer or not, it is the time to verification. So dear student, let's verify. Because these are the particular sentences little bit confusing to us also. So the emotion, the relationship we will put here and we will try to extract the answer. First question, I am your brother. Mu heuchi tumaro bhai. Chen housing colony, you can answer. Take your mic and you can answer, dear student. I am your brother, you are Dex sister. Kon hobo, my hobo, your hobo, his hobo, her hobo. Mu tomoro bhai, tume moro kono? Sister. So sound is not coming, just switch on the mic and say the answer, dear. My. You are my sister. Yes, your answer is correct. I am your brother. You are my sister. So you have correctly answered. Next question. She is my sister. I am Jack's brother. She is my sister. Simoro Bhoni. Son, government, Urdu school. You can answer. Take your mic and answer. Answer here. It is your turn. Take the mic and try to answer. She is my sister. I am Jack's brother. What pronoun you can use here? Okay, it is coming. Sound is coming, sir. Hello. Yes, sir. Sound is coming. It is audible. He is. He is my sister. I am his brother or her brother. Little bit thing. I am your brother. I am your brother. He is my sister. Because dear student, here this particular person is saying to someone else. Se kohuchi onne janaku ki se moro bhauni. To mu taro bhai hebi. Se seya kohuchi. But that I am your brother. Yes, right now you are correct. ଏଭଳି ଭାବରେ ତମକୁ ଏଟା ତମନେ
चिंता करिवार अछि आई एम हार ब्रदर होबो यार आंसर राइट नाउ यू आर करेक्ट ओके एभली समस्त चिंता करिवो आंसर दबो मु कहिथिल ना एटा लिटिल बिट कंफ्यूजन थिला एवं कंफ्यूज मध्ये हेइथिबो तुम माने ओके सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज माय फादर से होचंती मोर बापा आई एम जैक्सन मु तांको पुओ I am his तांको son. yes right now you are correct so I am his son I very am good his son. very good very good well you are his uncle तुमे होजो तारो uncle he is Jack's nephew से तुमरो nephew तो एठी तुमरो केस रे कोन हबो He is my nephew. no एठी मु भूल कहली sorry you are his uncle माने तमे होजो तारो uncle he is Jack's nephew तो से तांकर nephew तो एई केस रे कोन हबो टिके भाबी कुह He is your nephew. Here. he is your nephew okay he is your nephew the answer is correct से तुमरो nephew तो तुमरो जोटा इंग्लिश that is you and the answer is correct very good next dear students she is your mother you are Jack's daughter सी होचंती तुमरो मां तुमे होचो तांकर You are my झियो daughter. yes my daughter हवनी डियर एठी कोन कहूची जणे सेही पर्टिकुलर अन्य जण को कहूची सी इज योर मदर माने गोटे जण सेही पर्टिकुलर झियो को कहूची जे सी होची तोर मां सी होची तोर मां तो तू तार कोन हबु तू तार झियो हबु तो तार एठी तार केस रे को इंग्लिश वर्ड हबो को प्रोनाउन ता हबो तार केस रे दीटा एठी वर्ड अछि You are his ही daughter. अछि हार अछि ही अछि हार अछि You are his daughter. ही छबनी डियर काहे कि ना मदर तो फीमेल पर्सन फीमेल केस रे को प्रोनाउन यूज हुए हिच ना हार यूज You हो are her daughter. यस यू आर हार डॉटर तुम्हें तार झियो हार डॉटर ओके काहे कि ना मदर अछि एवं मदर इज अ फीमेल फॉर दैट रीजन हार प्रोनाउन वी नीड टू यूज हियर सेति पे एठी टे कंफ्यूजन हेथिले बहुत जण छुआ तो एठी हेजबो हार यू आर हार डॉटर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ही इज हर ब्रदर से होची तार भाई माने गोटे झियोर से भाई तो से झियो तार कौन हबो सी इज डेक सिस्टर से झियोर से सिस्टर तो सी इज डेक सिस्टर माने से पिलार से पुअर से भौणी तो पुअर भौणी केस रे को प्रोनाउन यूज हबो हिज यूज हबो ना हार यूज हबो वेरी गुड सी होची सेही पुअर भौणी यार अर्थ हला हिज okay so here each it will use here he is her brother she is his sister very good so you have answered correctly last particular part we have already done right now dear student it is my time to explore more about noun so dear student we know in English we have 8 part of speech and in your last class ma'am has already discuss with you what is noun, what are the various types of noun, okay, and also she has make you acquainted about pronoun, which is used instead of noun in a sentences. So dear student, in the present particular class, I am going to explore more about noun. So let's proceed towards the next slide. Dear student, we have already know noun is a naming words that contain person, place, things or idea. Noun is a part of speech because we have 8 part of speech. So in simple words what we can say, whenever we are observing in our environment, whatever the things are there, everything has name. आमे सराउंडिंग रे जहाँ भी किसी जिंस देखुचे आम चतुर्पार्श्व रे जहाँ भी किसी जिंस देखुचे से समस्तंकर ना गुड़ाक अच्छी ना पहाड़ पर्वत झरणा पड़िया गछ लोक ये सबुथर ना अच्छी तो व्हाट एवर वी आर ऑब्जर्विंग इन सिंपल वर्ड्स एवरीथिंग अराउंड अस इज अ नाउन आम चतुर्पार्श्व जहाँ भी किसी आमे देखुचे से सब गुड़ाक नाउन हो पारे कहीं ना से समस्तंकर ना अच्छी सेटा मेटेरियल्स हो पारंती लोक हो पारंती कौन सी प्राकृतिक वस्तु हो पारे जेकोसी जिनस हो पारे जेहेतु से माने आम चतुर्पार्श्व रे अवस्थान करुचंती
and they're having the names. That's where all the things around us are nouns. Okay, so dear student, we have already know all this. So let's proceed towards the other kinds of noun. Dear student, nouns actually 6 प्रकार: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun, countable and uncountable noun. Dear student, in your small classes, in your previous classes, whenever you are in class 8, whenever you are in class 7, whenever you are in class 6, you might have learned about the various kinds of noun. तो मैंने ए विषय पढ़ी थिबो proper noun जोटा कि गोटे इंडिविजुअल रो नाम को बुझाई थाए, कौन सी इंडिविजुअल व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिनसर नाम को बुझाई थाए. फॉर एग्जांपल राम, हरि, हिमालय, गंगा, दिल्ली, कोलकाता. ये स्टूडेंट ए सब गोटे गोटे इंडिविजुअल व्यक्ति, स्थान, जिनसर नाम को बुझाउची. सेति पई सेगुडा को प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन जोटा कि गोटे पर्टिकुलर वर्ड गोटे कॉमन जिनस को बुझाई थाए. जेंति आमे कहिबा बर्ड, आमे कहिले सेटा जे कोनोसी बर्ड हे पारे, मेल बर्ड हे पारे, फीमेल बर्ड हे पारे. तो सेंति किछि नाउन जोटे कॉमन नाउन रे आसी जिवो. पुणी कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल को बुझाउथिबो. जेंति आमे कहिबा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रे झियो स्टूडेंट भी जीवो, पुअर स्टूडेंट भी जीवो. तो स्टूडेंट्स, दोस हु आर स्टडी इन अ स्कूल्स, सो स्टूडेंट्स ए सब गुडा को तुमरो कलेक्टिव नाउन्स रे पळे आसीबो. तो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन यू मस्ट हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जोटा कि हमें देखि पारोनी, जोटा कि हमर फीलिंग्स को कहि परिबा हला, से गुडा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तमे एक्सप्लोर करिवो या विषय रे मोर, सो दैट यू कैन लर्न मोर. पुणी मटेरियल्स नाउन जोटा कि डिफरेंट मटेरियल्स को बुझाई जाई थाए. काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन. डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटेंट रे हमें पढिबा काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन. एवं तमर गोटे चैप्टर्स अछि इंग्लिश ग्रामर, तम बुक रे गोटे चैप्टर अछि. जेते बेले तमे नेक्स्ट पढिबो सेते बेले तुमको पूरा पढा जिवो गोटे चैप्टर काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. एवं सेत्र किछि साम्यक धारणा मु आज तुमको देबा को जाउची. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. So what are countables and uncountables? Now on the basis of count, noun can be classified into countables and uncountables. The countables कौन, uncountables कौन, हमें ठीक एक्सप्लोर करिवा आज. तो डियर स्टूडेंट, जो गुडा को countables तांको हमें गणी पारो. So noun which you can count using numbers, this called countable. डियर स्टूडेंट देखि पड़थुवो एठी केतटा एप्पल अछि, गोटे एप्पल. केतटा लायन अछंती ना, गोटे लायन अछि. एवं हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर, हियर 3 ऑरेंज आर देयर. तो जेहेतु आमे गणी पारुछि 1 एप्पल और एन एप्पल, अ लायन, 3 ऑरेंज. सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हाट वी गेट ना, आमे सबुडा गणी पारुछि. वी कैन यूज बिफोर इट ए और एन. आमे देखो एप्पल आगे एन लगे पारुछे, गोटे एप्पल, एन एप्पल. लायन आगे ए लगाउछि, अ लायन कहूचे. एवं एटी ऑरेंज थिला, आमे कहूचे 3 ऑरेंज. ओके, और वी कैन से अ फ्यू ऑरेंज, किछि ऑरेंज एटी अछि, आमे सेंति मध्य कहि परिबा. तो डियर स्टूडेंट, जो नाउन गुडा करे आमे ए लगै पारुचे, एन लगै पारुचे, 1 लगै पारुचे, 2 लगै पारुचे. लाइक दिस नंबर्स गुडा को आमे लगै पारुचे, मेनी लगै पारुचे, अ फ्यू लगै पारुचे, सेवरल लगै पारुचे. से सब गुडा को काउंटेबल्स. ए सब विषय रे तुम क्लियरली पढ़िबो. ओके, नेक्स्ट अनकाउंटेबल्स कोन. नेक्स्ट पिक्चर देखि पारुथबो. एटी कोन देखा जाउची, सुगर, चीनी रो छोटो छोटो दाना. तुमको यदि कहा जाए एवं गोटे मुठा चीनी दिया जाए, तुम गणी पारिबो ना, गणी पारिबोनी. डियर स्टूडेंट, आई कैन एबल टू से यू वन पर्टिकुलर स्टोरी हियर. गोटे छोटो स्टोरी कहबी, गोटे कौतुकिया कहानी अकबर बीरबल कर. अकबर राजा थिले जानिछो. अकबर इज a particular king. He is very famous in the Indian history. तांकर गोटे चतुर मंत्री थिला बीरबल. तो अकबर गोटे समय रे क्वेश्चंस कले जे ए पृथ्वी रे केतटा तारा, ए यूनिवर्स रे केतटा तारा अछि, किए गणी पारिबो. Those who can answer, I will award with so many golds. मु बहुत गुडे गोल्ड्स ताकू देबी. बहुत जण आसिले,
बहुत ट्राए कले किंतु केही गणी पारले नाही लास्ट को बीरबल आसिले तो बीरबल कहले मते गोटे राति टाइम दियंतु आई विल आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके डियर स्टूडेंट आई विल आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट डे से आसिले बहुत व्यस्त विव्रत हे आसिले बीरबल इज अ वेरी क्लेवर मिनिस्टर ऑफ अकबर एवं से बहुत माने एंती जणा पडुथला जे पूरा गणिबारे से राति सोई नाहांती खाली गणी थिले एंती से एक्टिंग कले ओके एवं आसिकी कहिले महाराज मु काउंट कर देछि आपण हाथ बढ़ांतु आई विल गिव यू द नंबर्स तो से कौन कले किछि मुठा सैंड सेठी से दे देले सैंड माने कौन नदीर जो छोट छोट दाना वाला बाली डियर स्टूडेंट देखिथिबो से नदीर बाली उडाक से तांकर हाथ मुठा दे देले कहले जे महाभाग बा महाराज मु एतले तारा गणुथली ए सब नंबर गुडा तो बहुत तो मु गोटे तारा को गोटे सैंड रखुथली एवं गणुथली एवं एते गुडे सैंड एटा हे जाईची एवं यूनिवर्स रे एते गुडे बाली अछि माने बाली सदृश्य तारा अछंती माने बाली को गणी जंतु जेतेटा बाली थिबो सेतेटा तारा अछंती यूनिवर्स रे राजा कोन सैंड को गणी परिबे सो द किंग डिफीटेड राजा सेठी हारी गले पहले बीरबल को पारी होबनी तो बीरबल को तांकू प्राइज देबा को ही पड़ला तो डियर स्टूडेंट व्हाट वी हैव लर्न हियर ना सैंड गणी होबनी अनकाउंटेबल गोटे मुठा सैंड को हमें गणी परिबा बाली को हमें गणी परिबा नहीं हाउ मेनी हेयर्स आर देयर इन आवर हेड हाउ मेनी हेयर्स आर देयर कैन यू काउंट नो हमें गणी परिबा नहीं सो डियर स्टूडेंट जो पर्टिकुलर नाउन गुडा को एठी तुमे शो करछ एठी तुमे देखुछ देखो चीनी अछि सुगर अछि हनी अछि महू अछि एंड वाटर अछि these are uncountables dear student we cannot use a and one too many in front of these nouns so noun which we cannot count are called as uncountables so dear students so गुडा कोन बोली हम कहूचे uncountables तो देखिबा नेक्स्ट पुनी कोन अछि ए काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल्स को आउट एक्सप्लोर करिबा dear student you can able to find the name of things can be counted as separate objects and they have got two forms such as singular and plural dear student जो माने countable जाको गणी हुए जो संज्ञा जो नाउन को जो मानकर दीटा रूप थाए सिंगुलर एवं प्लूरल माने एकवचन बहुवचन तुम ओडिया रे पढिथिबो एकवचन माने सिंगुलर बहुवचन माने प्लूरल तो जो नाउन रो दीट रूप थाए एकवचन एवं बहुवचन एवं जहाँ को आम गणी पारू से सब गुड़ाक काउंटेबल्स एवं देखा जाए जे ऑल कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल्स मु तुमको कहितली बॉय गर्ल ये सब गुड़ा कॉमन नाउन गोटे पर्टिकुलर बॉय मीन्स सेटा राम ही पारे हरि ही पारे श्याम ही पारे किहे भी ही पारंती गर्ल मीन्स सेटा सीता ही पारे गीता ही पारे मीता ही पारे जे कौन सी झियो ही पारे तो डियर स्टूडेंट से याकू कॉमन नाउन बोली कहा जाए कॉमनली इट रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ थिंग्स ओके जंती बुक रामायण ही पारे तुमरो मैथ्स बुक ही पारे तुमरो ज्योमेट्री बुक ही पारे माने मैथ्स बुक ही पारे इंग्लिश बुक ही पारे ओडिया बुक ही पारे ओके पेन व्हाटएवर इट मे बी रेड पेन ग्रीन पेन ब्लैक पेन okay etc so dear student all common nouns are countable जितने भी common noun अछंती ये सबु को हमें गणी परिबा okay सबु को हमें गणी परिबा so this is a trick to identify countable nouns okay dears next time जिबा टिके टिके साम्यक धारणा रखि थाओ जते बेले तुमको पढाबो पुनी काउंटेबल्स एवं अनकाउंटेबल्स पूरा क्लियर हे जिवो आजि मध्य क्लियर हे जिवो किंतु आउ थरे याकू पढाबो जते बेले तुमरो कंटेंट पार्ट आसीबो in the mid of the session okay so dear student एठी तुम देखि परथो काउंटेबल्स नाउन मु तुमको कहली तार दीटा रूप अछि गोटे हला सिंगुलर काउंटेबल नाउन एवं ताकू हमें प्लूरल फॉर्म रे कन्वर्ट मध्य करि परिबा जेंति एठी केतटा गछ अछि हाउ मेनी ट्रीज आर देयर डियर स्टूडेंट कैन यू काउंट द नंबर ऑफ ट्रीज आर हियर yes it is one तो गोटे ट्री अछि आमे एतले नेक्स्ट पार्ट को जाउछे सेठी ट्रीज बहुत गुडे अछंती okay so we can count but we can count the number of trees whatever it is there so dear student tree रे देखो कोन लाइक गला
s लाइक गला ये कौन है गला trees है गला so there is a procedure to convert singular countable noun into plural countable noun so trees कौन है गला sorry tree कौन है गला trees एठी केतरा बुक अछि डियर स्टूडेंट गोटे बुक अछि नेक्स्ट पार्ट रे देखो से चेंज हि जिवो एस लाइक गला बुक्स हे गला काहे कि ना एठी मोर देन वन बुक अछि ओके तो बुक कन्वर्ट हे गेले कोन हे जाय बुक्स देखो ये होची एक वचन गोटे बुक अछि बहु वचन रे बहुत गुडे बुक अछंती सेति पई बुक्स ओके सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आमे यार गोटे एक्टिविटी करबा सब माने वर्तमान पार्टिसिपेट करबो as I have already told you there are some certain procedure to change singular countable noun into plural countable noun so whatever the pre-existing knowledge it is there within you I am going to explore you तो आमे से रूल्स गुडा को पढिबा आगरु मु टिके टेस्ट करि दियो तमानकर मुंडरे किछि जिंस अछि ना नाही countable noun uncountable noun बा ए काउंटेबल नाउन को जतेले हम कन्वर्ट करछु सिंगुलर एवं प्लुरल विषय ताको केंत तुमे कन्वर्ट करूछ बा करूथुलो मुडी के टेस्ट करियो सो लेट्स पार्टिसिपेट ओके डियर स्टूडेंट यू आर गोइंग टू आंसर इट रेज योर हैंड टेक योर मिक फ्रॉम द डेस्क एंड आंसर मी ट्री जतेबेले चेंज हिजबो प्लुरल फॉर्म को कोन हबो ऑलरेडी दिस आई हैव डन टू यू ओके एटा मु टिके स्लाइड कर दउची ट्री चेंज हे की ट्रीज हे जाय नेक्स्ट तमे कहो वॉच रो कोन हबो वॉच वॉच माने गोटे घंटा जदि मोर देन वन वॉच हिजबो ते कोन हिजबो इराकोरा गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू वॉचेस वेरी गुड यू हैव आंसर करेक्टली वेरी गुड सिटी ईएस लागि जिवो वॉच रे वॉचेस कंट्री अछि कंट्री रो प्लुरल फॉर्म कोन केवल कंट्री लिखिले गोटे कंट्री को हम बुझी था कंट्रीज यस वेरी गुड कंट्रीज किंतु ए जो कंट्रीज रा स्पेलिंग देखो केनी चेंज हे गला वाई परिवर्ते आईएस हे गला ओके नेक्स्ट मैंगो अछि मैंगो यू कैन आंसर डियर मैंगो रो कोन हबो खुड़गांव नोडल हाई स्कूल डियर एनीवन इज देयर फ्रॉम खुड़गांव नोडल हाई स्कूल मैंगोस ओके मैंगोस एस लागि जिवो वेरी गुड सॉरी एस लागि जिवो so mango ro mangoes हे गला नेक्स्ट आमे फूट को जिबा फूट रे पूरा अल्फाबेट एठी चेंज हि जिवो मिडिल पार्ट रो फूट रो के कहि परिबो हु कैन आंसर फीट खुड़गांव नोडल हाई स्कूल यू कैन आंसर आल्सो टेक द मीक एंड आंसर इट ओके यू कैन आंसर दैट गर्ल्स हाई स्कूल यस फीट वेरी गुड यस फूट रो हे जिवो फीट वेरी गुड ओके वेल डन नेक्स्ट ओमेन ओमेन रो कोन हिजबो WOMAN ओमेन वुमेन विमेन डियर स्टूडेंट यार प्रोनाउंसिएशन मध्ये चेंज हो जाए यार प्रोनाउंसिएशन मध्ये चेंज हो जेतेले ई लागि जाए से प्लुरल हे जाए तो तार प्रोनाउंसिएशन मध्ये तुमे चेंज करके पढिबो ओमेन वीमेन ओके सो डियर स्टूडेंट ओमेन कोन हे गला वीमेन हे गला ओके सो यू हैव डन वेल नेक्स्ट आमे जिबा आउ टिके पढिबा काउंटेबल्स अनकाउंटेबल्स नाउ आवर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टू नेक्स्ट आई हैव गेम फॉर यू मु तुम मन को पाई किछि गेम्स मध्ये रखिछि यू आर गोइंग टू प्ले टुडे ओके स्मार्ट बोर्ड रे आमे किछि गेम मध्ये खेलिबा ओके एंड विल एक्सप्लोर द पर्टिकुलर पार्ट आमे जिबा एठी किछि रूल्स प्रथमे पढिबा काहे कि नामे देखिले जे सर्टेन प्रोसीजर्स आर देयर किछि वर्ड्स गुडा करे एस लागि जाउथला किछि वर्ड्स गुडा करे एस लागुथला किछि वर्ड्स गुडा कर अल्फाबेट पूरा चेंज हि होउथला आमे देखुतले वावेल गुडा को चेंज हि होउथला ओ परिवर्ते ई हि जाउथला ए परिवर्ते ई हि जाउथला त आमे देखिबा एठी किछि एग्जांपल्स नेबा जे स्टूडेंट एठी देखि परथु हाउ मेनी गोट आर देयर इज अ गोट बट हियर गोट्स आर देयर बहुत गुडे गोट अछंती तो गोट रो कोन हि होउची गोट्स हि होउची तो किछि नाउन केस रे कोन हुए जते बेले सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आमे कन्वर्ट करूछु प्लुरल केस रे ता संगरे एस सिंपली लागि जाय थाए तो सेही वर्ड गुडा को कोटा ना गोट रे एस लाइक गले गोट से गला ट्री रे एस लाइक गले ट्री से गला कार्ड रे एस लाइक गले कार्ड से गला काउ रे एस लाइक गले काउ से गला एटा किछि कॉमन वर्ड्स अछि जोठी सिंपली एस लागि कि आमे ताको कन्वर्ट कर दोचे प्लुरल काउंटेबल नाउन रे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट सेकंड रूल
by adding es to singular countable noun ending in s, ss, tch, ss. Dear student, किछि word गुड़ाक जोटा s रे शेष ही थांती, ss रे शेष ही थांती, tch रे शेष ही थांती बा sh रे शेष ही थांती, सी word गुड़ाक जेतेला मैं कन्वर्ट करूचे प्लुरल काउंटेबल नाउन रे से केस रे हमें es जोग करिवा जेंती गैस लास्ट कोन अछि डियर स्टूडेंट s अछि कन्वर्ट कले es लगाई देबा गैसेस हे जिवो वॉच रे जेंती तमे कन्वर्ट करथुलो सेठी कोन अछि tch अछि तो सेही केस रे कोन हिउथला es लगाई दउथले हमें वॉच रो वॉचेस हिउथला तमे देखि पड़थुबो गोटे वॉच बहुत गुडे वॉचेस सेही भलिया फॉक्स रो कोन हिउची फॉक्सेस ओके ग्लास रो ग्लासेस एठी एसएस अछि ईएस ही जाउतला सो ए भलिया किछि केस अछि जोठी हमें ईएस लय की कन्वर्ट कर दउची ताकू प्लुरल फॉर्म रे लिखला बेले ओके डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमें जीवा नेक्स्ट स्लाइड को थर्ड नंबर पर्टिकुलर रूल्स सिंगुलर काउंट नाउन ending in y with a consonant before it we use IES to make them plural. जेते बेले डियर स्टूडेंट गोटे पर्टिकुलर नाउन y रे शेष होई थाए एवं ता आगरु कॉन्सोनेंट थाए डियर स्टूडेंट कॉन्सोनेंट तमे जानि छ a e i o u को छाडी देले आउ बाकी जेते मध्य रही गला तमरो 21 टी अल्फाबेट से सब गुडा कॉन्सोनेंट तो कंट्री रो लास्ट रे कोन अछि डियर स्टूडेंट y अछि y रो आगरु r अछि से गुटे कॉन्सोनेंट सेथि पई आमे एतले कन्वर्ट करूछु ताके प्लुरल काउंटेबल नाउन रे y को काटी की ies जोड़ी दउचे से भलिया पार्टी रो पार्टीज लेडी रो लेडीज बॉडी रो बॉडीज ओके इट क्लियर हेलो कंट्री रो कंट्रीज लेडी रो लेडीज पार्टी रो पार्टीज बॉडी रो बॉडीज नेक्स्ट दिवा फोर्थ नंबर रूल्स नाउन्स एंडिंग इन fe usually replace f or fe with ves to make plurals. Dear student, जो noun गुड़ा को f किंबा f रे शेष हिथिबो सॉरी f किंबा fe रे शेष हिथिबो से गुड़ा करे जेतला में प्लुरल को कन्वर्ट करूचे f एवं fe को हमें रिमूव कर देबा एवं f fe परिवर्ते हमें ves जोड़ी देबा जेमिति thief को कन्वर्ट करिबा प्लुरल रे तो ef को काटी की हमें thi ves कर देबा तो डियर स्टूडेंट तारो जो लास्ट पार्ट रे जो f ता अछि ताको हमें काटी देबा सेही केस रे हमें ves लिख देबा तो thief रो thieves ही जाय leaf रो leaves ही जाय डियर स्टूडेंट देखो leaf leaf leaves leaves leaf रो तमे खाली s लगे देले हबनी से भूल हे जिवो तापरे कोन करिवो f टाउ काटी की leaves करिवो wife रो wipes knife रो knives ओके नेक्स्ट जीवा तुम जानि छ नाइफ्स माने छुरी तो लिप माने पत्र जानि छ तो ओके सो दिस थिंग्स यू माइट हैव नो सो आई एम नॉट टेलिंग द ओडिया ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर वर्ड ओके थिप माने चोर बहुत गुडे चोर मोर देन वन वाइफ माने स्त्री बहुत जण स्त्री जदी पर्टिकुलरली हि जिवे वाइफ से जिवो लीफ लीव्स नाइफ नाइफ्स क्लियर नेक्स्ट जीवा nouns ending in o जते बेले कोनसी nouns last को थिबो o take s and some other take es to become plural तो सेही केस रे बेले बेले हमें s सिंपली लगे थो किछि किछि केस रे es मध्ये लगे थो तो ताकू मन रखियो पड़िबो प्रैक्टिस करियो पड़िबो को केस रे हमें s लगेबा es लगेबा जो नाउन गुडा कर लास्ट रे o थिबो फोटो रो लास्ट रे o अछि सिंपली हमें एस लगौचे फोटोज ही जाउची मैंगो रो लास्ट मध्ये ओ अछि किंतु सेठी एस लगेले भूल हे जिवो यस लगेबा से भलिया पोटैटो टमाटोज ए सब गुडा करी यस लागिवो पियानो रो केवल एस लागुची तो फोटो एवं पियानो केस रे सिंपली एस लगेले मैंगो एवं पोटैटो केस रे यस हमें जोड़ी देले देखो तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग डियर स्टूडेंट बहुत मजा लागो एतले तुमको पुणी पढ़ा जिवो काहे कि ना मु तो चारि चारिटा वर्ड नै छी बुक रे तुमरो बहुत गुडे वर्ड्स अछि एतले चैप्टर आसीबो बहुत मजा लागे एक्टिविटी उडा करबा पई ओके मु तुमको किछि एक्टिविटी मध्ये देबी यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट नेक्स्ट जीवा हमें आउ किछि स्लाइड अछि ए रूल्स विषय ये स्टूडेंट देखि पड़थबो दांत केतले दांत बहुत गुडे दांत अछि ना
yes or no? So जोठी particularly oo थाए किछि noun रो middle जदि oo थाए we change oo into ee to make them plural किछि noun रो middle part रे जदि oo थिबो सेई oo change है कि ee हेई जाए जेंति tooth रो middle रे oo अछि सेटा ee हटि जिवो dear student there is a spelling error I have done here so you just excuse me just as you will add here okay so tooth ro teeth hejibo foot ro feet hejibo okay so note down it एठी गोटे मिस्टेक थिला स्पेलिंग एरर ताकु टिके रेक्टिफाई करिवो नेक्स्ट रूल्स नंबर 7 some nouns do not change their forms into plural किछि नाउन अछंती से माने चेंज होंतिनी से माने चेंज होंतिनी से माने प्लुरल रे मध्ये सेही पर्टिकुलर वर्ड रहिबे सिंगुलर रे मध्ये सेही पर्टिकुलर वर्ड रहिबे पीपल लोक मानको हमें बुझी थाओ people people cattle cattle sheep sheep yes student again there is a spelling error you will particularly put p over here this kind of mistake it happened so you'll ignore my mistake sheep sheep deer deer okay so in this way dear student you need to remember these are the words where these are not going to change in any particular condition when we are going to convert these into plurals change hobani next diba some nouns change their forms in plural jenti ethi dekhi parutho dear student men ro pura change hi jaଉଛି man अछि men hi jaଉଛି child ro children different word भलिया पळे अछि child ro children aryan like गला ox ro auction mouse ro mice okay गोटे मुसा बहुत गुडे मुसा हेले mice hi जाଉଛି एगुडा को तमे मन रखिबो these are the words you need to remember so that's why english is very funny तुमको बहुत गुडे वर्ड मन रखिबर अछि you need to develop your vocabulary and these are the words can improve your vocabulary and while you will improve your vocabulary it will help you to speak better okay तो एतले तुम एसो वर्ड गुडा को पढिबो मन रखिबो ताको यूज करिवो तुमर vocabulary power बढ़िबो and you can speak english better okay this student next jiba noun that cannot be counted as separate objects are called uncountable किंतु जो noun गुडा को काउंट करि पारुनी से गुडा को हमें uncountable बोली कहउची countable noun हम पढुथिले countable रो दुटा रूप थिला सिंगुलर प्लुरल वर्तमान uncountable noun बिसरे टिके मु कहि दउची ये स्टूडेंट जते भी कलेक्टिव नाउन्स अछि से सब गुडा को uncountable जेंति क्राउड रे कोन थांती बहुत जण लोक थांती बहुत जण लोकन को हमें गणी परिबानी क्राउड ऑफ पीपल गोटे मेला हिथिबो सितर हजार हजार लोक आसुथिबे जाउथिबे केंदी गणिबो बर्ड्स आकाश रे फ्लाइंग करथुबे केंदी गणिबो हाउ यू कैन काउंट सो फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स यू कांट काउंट टीम ग्रुप फ्लॉक क्लास bunch dear student these are the collective nouns which is considered as uncountable याकु हमें गणी परिबानी एथरे केते लोक थिबे केते फ्लावर्स थिबो केते पक्षी थिबे कहि हबनी काहे कि ना क्राउड ऑफ पीपल एंदी कहा जिवो ओके नेक्स्ट जिवा में जनरल नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आर अनकाउंटेबल जो गुडा को मटेरियल्स थांती वस्तु थांती सब्सटेंसेस थांती जिनसोडा थांती से सब गुडा को हमें अनकाउंटेबल्स कहथौ जंती मटेरियल्स जंती iron cotton cloth coffee gold wood pearl silver ये सब गुडा को अनकाउंटेबल डियर स्टूडेंट काहे कि ना ये सब मटेरियल्स नाउन जोटा की सब्सटेंसेस गुडा बुझा जाउची माने एथरु जिंस गुडा को जो तयारी हेई थाए पर्टिकुलर सपोज शर्ट हेतिबो कि पैंट हेतिबो ताको हमें गणी परिबा किंतु कॉटन कहिले क्लॉथ कहिले तो हजार हजार लक्ष लक्ष शर्ट पैंट को बुझा जाई थाए तामे ताको गणी परिबानी कॉफी कॉफी केंदी गणीबो से डस्ट ताको पुनी पानी रे फुटे देले कॉफी तयारी कर से लिक्विड हे जाउची गणी परिबानी गोल्ड गणी परिबानी वुड गणी परिबानी पर्ल गणी परिबानी सिल्वर अनकाउंटेबल ओके अनकाउंटेबल नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल दिस टुडे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मु तुमको कहितली जोटा देखि होएनी जेंति तमर फीलिंग्स प्लेजर तमर फीलिंग्स एटा गोटे ट्रुथ ऑनेस्टी ब्यूटी विजडम विजडम माने प्रज्ञान बा ज्ञान ब्यूटी माने सुंदरता ऑनेस्टी माने साधुता क्रुएल्टी माने हला हिंस्र गुण जोटा तार ना
सेटा मध्ये तुमरो पळैबा एब्स्ट्रैक्ट नाउन रे आमे सेठी देखिथिले ब्लाइंड गोटे ट्रुथ प्लेजर एसो गुडा अनकाउंटेबल नाउन रे तुमरो पळै जिवो जोटे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ए पर्टिकुलर भित्ति रे तुमे चिन्हि परिबो एगुडा को अनकाउंटेबल बोली ओके डियर स्टूडेंट ओके सो नेक्स्ट आमे जिबा एक्टिविटी करिवा तमे तो ऑलरेडी लर्न कर देलो किछि रूल्स राइट नाउ इट इज योर टाइम टू आंसर अगेन लेट्स कन्वर्ट दीज आर द वर्ड्स इनटू प्लूरल फॉर्म चलो आमे देखिबा पुनी कन्वर्ट करिवा ओके काउ रो कोन हबो कुह डियर स्टूडेंट काउ रो कोन हबो Kenbahal High School, can you answer it? Take the milk. Kenavada High School, yes, you can answer. Take the milk and take the milk and answer it. Cow ro kon habo? Ame padhithile cow. Kichi word re kon lagai dele ame taku convert kar dauche plural re. Cows. Cows, very good. Cow ro hijibo cow simply ame s lagai dauche. Box ro kon habo se bhaliya? ये स्टूडेंट बॉक्स रो कोन हबो मु गोटे वर्ड देथिली बॉक्स रिलेटेड से भलिया गोटे वर्ड देथिली जोटी एक्स एक्स थाए केमती कन्वर्ट हेई थाए ट्राई ट्राई भूल हेई थाओ भूल हेई जाओ किंतु ट्राई करो आंसर करो किछि असुविधा नाही यू मस्ट पार्टिसिपेट Boxes. बॉक्सेस बी यू एक्स ई एस बॉक्सेस एवं पार्टी रो पार्टीज हेगला काहे कि ना लास्ट वाई अछि ता आगरु टी अछि कॉन्सोनेंट आईएस लागला डियर स्टूडेंट वाई परिवर्ते थिप्स रो मु तुमको कहिथिली एफ को हटे कोन कर दबो एफ को हटे की कोन लिखि दबो सेठी थिप रो कुह आंसर कुह Thieves. थिप्स स्पेलिंग दिए कहि परिबो कैन यू से द स्पेलिंग Thies. नो Thief. नाइ सेठी एफ परिवर्ते मु कहिथिली VES जोडिबो एबे कुह स्पेलिंग एफ को हटे की VES जोडी दबो लास्ट रे एबे कुह स्पेलिंग Thies. THIEVES ओके THIEVES थिप्स टूथ रो कोन हिजबो डियर टूथ रो कोन हिजबो के कहि परिबो टूथ रो कोन हिजबो ऑलरेडी आई हैव शोन यू मु तुमको देखैथिली और बहुत गुड एक्टिविटी अछि जल्दी जल्दी करो गेम्स अछि खेलिबा Teeth. टीथ वेरी गुड Teeth. ई हेजबो यस टीथ चाइल्ड रो कोन हेजबो चाइल्ड रो पूरा वर्ड चेंज हिउथला इथि किछि लगाउथिले तीनटा अल्फाबेट तीनटा लेटर लगाउथिले लास्ट तीनटा लेटर चिल्ड्रन वेरी गुड चिल्ड्रन चिल्ड्रन यस चिल्ड्रन माउस रो कोन हेउथला माउस रो चारिटा लेटर वाला वर्ड हेउथला पांचटा लेटर वाला वर्ड परिवर्ते माउस गोटे मुसा गोटे रु अधिका हे गेले कोन हे जाय एम आई कोन एम आई सी माइस यस वेरी गुड एम आई सी माइस करेक्टली आंसर नेक्स्ट हमें जीवा डियर स्टूडेंट काउंटेबल vs अनकाउंटेबल जते बेले हमें काउंटेबल देखुचे अनकाउंटेबल देखुचे काउंटेबल रो तो दीटा रूप अछि तो काउंटेबल नाउन जोटा सिंगुलर से सिंगुलर वर्ब को कैरी करि थाए जेंति भुवनेश्वर एटा काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेहि पय देखो डियर स्टूडेंट इज लागिला तो से सिंगुलर वर्ब को कैरी करि थाए किंतु जते बेले प्लूरल काउंटेबल नाउन कथा आसी थाए से प्लूरल नाउन को कैरी करि थाए सेहि पय टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स आसिला ए रिलेटेड आमे किछि एक्टिविटी करिवा जोठी सिंगुलर काउंटेबल नाउन थिबो से सिंगुलर वर्ब को कैरी करिवो जोठी प्लूरल काउंटेबल नाउन थिबो से प्लूरल वर्ब को कैरी करिवो से रिलेटेड आमे किछि एक्टिविटी करिवा डियर स्टूडेंट तुम माने तो देखिलो किछि किछि वर्ड रे कोन होउची ए लागुची एन लागुची ए एवं एन लागिले से बुझौची केवल गोटे ही सेही नाउन ही अछि किंतु सोम जदि आमे लिखि दउची मोर देन वन अछि एनी लिखि देले आमे जानुनी केते अछि जे ओके तो डियर स्टूडेंट एठी आमे किछि जिंस डिराइव करिवा आमे टेबल रु किछि जिंस सिखिबा देखो ए जिन एथरे कोन लिखाइ छी किछि लिखाइ छी वर्ड बा नाउन को काउंटेबल पर्टिकुलर बॉक्स तळे किछु को लिखा जाई छी अनकाउंटेबल बॉक्स तळे
मु जेमिति कहूची सेमति बुझिया को चेष्टा कर डियर स्टूडेंट तमे देखि परथबो एठी एन एप्पल माने गोटी आत पुनी सोम एप्पल्स किछि आत डियर स्टूडेंट पॉजिटिव केस रे काउंटेबल नाउन केस रे आमे एन मध्य लगे पारुचे सोम मध्य लगे पारुचे यार अर्थ हैला आमे ए एन सोम आमे लगे पारुचे पॉजिटिव केस रे काउंटेबल नाउन केस रे किंतु सेही सोम टाकू आमे अनकाउंटेबल केस रे मध्य व्यवहार करि परिबा जो गुडा को अनकाउंटेबल नाउन किछि बटर किछि लहुणी लहुणीटा डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल तो किछि लहुणी केस रे आमे सोम बटर लिखि परिबा जेंति आमे काउंटेबल केस रे मध्य लिखि पारुथिले सोम एप्पल्स किछि एप्पल्स को गणी हुए तो डियर स्टूडेंट ही हमें देखिले जे सोम वर्डटी उभय काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल केस रे व्यवहृत होउची पॉजिटिव सेंस रे हैला पॉजिटिव सेंस रे उभय काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल केस रे व्यवहृत होउची किंतु तळे गोटे वर्ड देखो तळे किछि वर्ड लिखाई छि देखो अ टमाटो एनी टमाटोस डियर स्टूडेंट याकू हमें लगे कि फ्रेम करिवा सेंटेंस वी डू नॉट नीड अ टमाटो वी डू नॉट नीड एनी टमाटोस वी डू नॉट नीड एनी राइस वी डू नॉट नीड एनी सुगर डियर स्टूडेंट आम्हे गोटे टमाटो आवश्यक करूना आमे किछि भी राइस आवश्यक करूनु आमे किछि भी टमाटो आवश्यक करूनु आमे किछि भी सुगर आवश्यक करूनु हमको दरकार नाही बोली कहा जाय छि एठी तो एठी हमें कौन सिखिले जे नेगेटिव केस रे ए व्यवहार हमें करूचे एवं एनी रो व्यवहार हमें पर्टिकुलरली देखुचे काउंटेबल केस रे मध्य अनकाउंटेबल केस रे मध्य एनी रो व्यवहार हमें करूचे एठी हमें गोटे जिंस सिखिबा डियर स्टूडेंट सोम ता व्यवहृत होउची उभय काउंटेबल केस रे अनकाउंटेबल केस रे एनी ता व्यवहृत होउची सी काउंटेबल केस रे अनकाउंटेबल केस रे किंतु डिफरेंस हला सोम यूज होउची पॉजिटिव केस रे एनी यूज होउची नेगेटिव केस रे जोटी तुमे नाही बोली कहूछ सेठी एनी लगैबो नॉट जोटी थिबो सेठी एनी लगैबो बुझी पारलो आमे किछि एक्टिविटी करिवा नेक्स्ट डू वी नीड अ टमाटो डियर स्टूडेंट तुमे किछि बा आमे किछि टमाटो आवश्यक करूजे कि डू वी नीड एनी टमाटोस डू वी नीड ए टमाटोस डू वी नीड एनी राइस डू वी नीड एनी सुगर डियर स्टूडेंट एई पर्टिकुलर पार्ट में या सिखले जे एई जो पर्टिकुलर एनी वर्ड टी आमे इंटीजर्स केस रे मध्य व्यवहार करिथाउ क्वेश्चन सेंटेंस रे मध्य व्यवहार करिथाउ हला याकू नै कि आमे किछि एक्टिविटी करिवा तो एठी तमे एक्टिविटी करिया पे रेडी हे जाओ एई सेम जिंसो जहा मु कहिली से सब लेखा हैछि पॉजिटिव केस रे सोम व्यवहृत होउची नेगेटिव केस रे एनी व्यवहृत होउची एवं क्वेश्चन सेंटेंस गुडा करे एनी व्यवहृत होउची एबे आमे जिबा देखिबा गुटे गेम खेलिबा ये स्टूडेंट प्रथमे तुमको देखाउथो गोटे हॉरर पर्टिकुलर स्क्रीन ओके ये सुनो तो एठी कोन देखा जाउची डियर स्टूडेंट किछि पानी अछि आमे एक्सप्लोर करिबा ये कोन कहूची इज देयर एनी वाटर ऑन द फ्लोर डियर स्टूडेंट देखो एनी रो व्यवहार से कला एठी किछि पानी अछि की को केस रे व्यवहृत हैला ना क्वेश्चन सेंटेंस रे व्यवहृत हैला तो से कोन कहिबो जदी थिबो हां कहिबो यस देयर इज कहिबो तो से कोन आंसर करूची देखिबा पानी अछि से कहला यस देयर इज नेक्स्ट हमें जिबा एठी आउ किछि हमें एक्सप्लोर करिबा से देखो ई पर्टिकुलर पार्ट रे से जादू कर देला पानी को से गायब कर दोची देखो एबे पुनी से कहूची नो देयर इज नॉट ठीक के मजा हमें करिबा जस्ट नेक्स्ट हमें जिबा एठी गोटे कोन अछि गोटे कैट अछि नाही गोटे कैट अछि ये पुनी प्रश्न पचारिबो कोन प्रश्न पचारिबो इज देयर अ कैट ऑन द टेबल जे स्टूडेंट देखो मु तुमको कहितली एटी नेगेटिव केस रे व्यवहृत होउची क्वेश्चन सेंटेंस रे व्यवहृत होउची एवं एठी देखो तुमर व्यवहृत केंति हला इज देयर अ कैट ऑन द टेबल अछि तो से कहिबो यस देयर इज याकू पुनी हमें मंत्र रे गायब कर देबा जादू रे गायब कर देबा ये जादू कर देला एठी गायब हे गेला एवं से कहूची नो देयर इज नॉट सिंपली हमें बहुत व्यवहार सिखुची आ नेक्स्ट हमें जिबा एठी कोन अछि डियर स्टूडेंट गोटे बुक अछि ना बहुत गुडे बुक्स अछि नाही तो एठी कोन व्यवहार हबो मोर देन वन केस रे सोम व्यवहार हेई थाए ओके तो हमें देखिबा आर देयर एनी बुक्स ऑन द टेबल यस
एठी जेहेतु क्वेश्चन पचारुची सेठी पई कोन यूज हला एनी व्यवहृत हला सम परिवर्ते some books yes some books are here किंतु जेहेतु क्वेश्चन सेंटेंस एनी व्यवहृत हला तो डियर स्टूडेंट जेहेतु बुक्स अछि यार आंसर आसीबो यस देयर आर ओके तो भली भाबरे से पुणी गायब कर देला से पुणी कहू छु नो देयर इज नॉट डियर स्टूडेंट राइट नाउ इट इज द पर्टिकुलर एक्टिविटी टाइम तुम तो देखि देलो से पर्टिकुलर पार्ट टी देखि देलो एबे एक्टिविटी टाकू तुम सॉल्व करिवो आमे व्यवहार करिवा को पर्टिकुलर फ्रेज एठी डियर स्टूडेंट एठी तुम कोठी स्टूडेंट देखुचो यस किछि स्टूडेंट अछंती किछि स्टूडेंट अछंती नाही तमे कोन लिखिबा देयर इज एनी स्टूडेंट हियर ना देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट हियर ना देयर आर स्टूडेंट हियर ना दे आर नॉट स्टूडेंट हियर ना इज देयर एनी स्टूडेंट हियर आर देयर स्टूडेंट हियर आमे टच करिबा जोटा टच करिबा सेटा आंसर हि जिवो एटा गोटे गेम तमे सिलेक्ट करो कोटा मु टच करिवि व्हिच पर्टिकुलर पार्ट आई विल टच लास्ट को देखि दियो क्वेश्चन सेंटेंस अछि क्वेश्चन मार्क्स अछि एटा क्वेश्चन सेंटेंस है जेहेतु क्वेश्चन सेंटेंस कोउथिरु आरंभ हबो पुनी सिंगुलर एवं प्लुरल को देखिबो ये स्टूडेंट जेहेतु क्वेश्चन सेंटेंस मु तुम क्लू दे देउची ए दीटारो ही गोटे ही लागिबो इज देयर एनी स्टूडेंट्स हियर हबो नहले आर देयर एनी स्टूडेंट हबो ए दीटारो कोटा हबो मते कहो पार्टिसिपेट टेक द मीक एंड पार्टिसिपेट आंसर इट सर इज देयर एनी स्टूडेंट्स हियर हबो ना आर देयर एनी स्टूडेंट हियर हबो मते कहो मु तो टच करबी द आंसर विल बी देयर Are there any student in here? very good well done dear well done answer correctly तो मु are there any को क्लिक करूची yes your answer is correct okay next दिवा अच्छा एठी कोन हबो dex some students here एठी किछि स्टूडेंट अछंती सेठी पे पॉजिटिवली जेतले हम आंसर करूची कोन लिखिबा there is some students हबो ना there are some student हबो ना there is not some student हबो ना there are not some student हबो एठी कहो अच्छा आमे किछि गलत टाकू क्लिक करबा मु गोटे गलत जिंस को क्लिक करूची देखिची हेबा ना नाही there is not मु क्लिक करूची किंतु छुआ तो अछंती ना त मु there is not को क्लिक करूची dear student होउची की होउनी मते कहो करेक्ट आंसर कोडा हबो कहो मु क्लिक करबी देयर आर नॉट क्लिक कली से हेलानी आर देयर को क्लिक कली से हेलानी तो आंसर कोडा हबो कहो There are some students here. अच्छा देयर आर को तुमे कहउछो मो देयर आर को क्लिक करूछु यदि आंसर न हला रिक्स तमरो अरे आंसर है करेक्ट very good okay dear student next slide jiba dex any student here एठी किछि स्टूडेंट नहांती तो कोटा हबो एठी किछि स्टूडेंट नहांती तो कोन हबो आंसर मो देयर इज को क्लिक कली हला नि देयर आर को क्लिक कली हला There are not. अच्छा देयर आर नॉट वेल यू हैव आंसर करेक्ट ओके नेक्स्ट स्लाइड हमें जिबा तमे आंसर करेक्टली दे दोछो अच्छा डियर स्टूडेंट एठी गोटे ऑल अछि ऑल पेचा जाउ कहउछे डेक्स एन ऑल हियर गोटे पेचा अछि ताहले हमें कोन लिखिबा हमें इज देयर एनी करिबा ना इज देयर एन ऑल हियर अच्छा मु क्लिक करूछु देखिबा होउनी होउनी मोर दीटा अटेम्प्ट करला तम माने करो There is. देयर इज अच्छा लिखिबा देयर इज वेरी गुड ये हे गला वेल डन डियर वेल डन हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा टेक्स एनी केट हियर एछि किछि केट देखा जाउची की जदि देखा जाउची तमे लेखो न देखा जाउची कोन हबो कुह इंटरेस्टिंग नाइ केट अछि की कोठी देखो सबोडे देखो सब चतुर पार्श्व देखो après आंसर करो देयर इज एनी केट हियर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क्स अछि देखो पुनी लास्ट को क्वेश्चन मार्क अछि माने क्वेश्चन पचरा जायछि जे एठी किछि एठी कैट अछि की किछि कैट अछि की गोटे कैट गोटे लिखाई सिर्फ कैट लिखाई तुम मैंने देखो कैट लिखाई को पर्टिकुलर क्वेश्चन सेंटेंस तुम यूज करिवो ईच देयर करिवो ना आर देयर तो जणा इज देयर काहे कि ना एठी कैट अछि वेरी गुड काहे कि ना सेठी कैट सिंगुलर थिला सेठी पय हम सिंगुलर वर्ब को नेले ईच को नेले बुझी पाइलो तो जो हम कहितली तुमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैरी सिंगुलर वर्ब
plural countable noun carry plural verb एटा सेटा में application करूची implement करूची dear student next slide takes any water here positive sentence एठी किछि पानी अछि कि dear student पानी तो देखा जाउनी बोधे तुमको देखा जाउची देखो तो कौन हबो There is. what there is कहूचो there is No. हेलानी एठी तो पानी नै तमे कहूचो there is को क्लिक करो सर हेलानी एठी तो पानी नाही तमे कहूचो there is any water here हेलानी Are there? There is not. are there केमती हबो dear There is not. There is not. there is not को क्लिक करूची there is not There is क्वाड अछि there is not क्वाड अछि एटा there are not एटा there is not की हां एटा there is not हां there is not हे गला आंसर करेक्ट काहे ना एठी पानी नाही एवं वाटर टा डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन गुडा को सोले सिंगुलर वर्ब को कैरी करथांती ऑलरेडी द टाइम इज गोइंग टू ओवर डियर स्टूडेंट इट इज राइट नाउ द टाइम फॉर योर होमवर्क पार्ट डियर स्टूडेंट एछि किसी होमवर्क मु तुम मन को पई सेट करिछि ऑलरेडी वी आर गोइंग टू एंड दिस पर्टिकुलर सेशन किसी होमवर्क मु रखिछि तीनटा स्लाइड होमवर्क तुम मन को पई अछि बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क देखो पिक्चर देखि पारुथबो ए डेस्क ऑफ टी ए डेस्क ऑफ ब्रेड ए डेस्क ऑफ वाटर ए डेस्क ऑफ सूप तुम माने डियर स्टूडेंट एई जो वर्ड गुडा का अछि ताकू नै कि पुट करिवो काहे कि ना ए सब वर्ड टी हला ब्रेड हला वाटर हला सूप ए सब अनकाउंटेबल किंतु आमे ताको काउंटेबल करि पारु जेते बेले आमे किछि वर्ड ता आगरे पुट करू हला गोटे जिंस मु कहि दउची जेंती एठी ए कप ऑफ टी गोटे कप चा अछि ताकू इतला में लिखि दउची टी टा एठी काउंटेबल हिसाब रे हमें परिगणित करूचे किंतु टी टा अनकाउंटेबल नाउन डियर स्टूडेंट ओके से भले तमे एई वर्ड गुडा को सेठी लिखिबो ओके ए जो टी गुडा को मु लिखि देइची टी लिखि देइची ब्रेड लिखि देइची बटर लिखि देइची तम माने खाली जो वर्ड गुडा को नेक्स्ट रही गला ताकू जाई की सिलेक्ट करके तम माने एटा करिवो ओके मु परसिव करबी तम माने कर दबो किछि डिफिकल्ट नाही नेक्स्ट तम माने गोटे होमवर्क पुनी करिवो एठी किछि वर्ड अछि वाटर न्यूज़पेपर ब्रेड एग टी मिल्क चीज पेन सोप बुक कॉफी ए भितरु जोटा काउंटेबल गणी परिबो काउंटेबल बॉक्स रे रखिबो जोटा अनकाउंटेबल गणी परिबोनी अनकाउंटेबल बॉक्स रे रखिबो आई थिंक दिस विल बी आल्सो इजी फॉर यू तम मानको एटा मध्ये इजी लागिबो करि दबो एवं तम मानकर कंसर्न टीचर्स को कंसल्ट करिवो ओके आउ गोटे होमवर्क डियर स्टूडेंट तम मानको पई दिया जिवो सेटा हला ट्रांसलेशन हाथी एक वन्य प्राणी अटे राम और हरि भल सांग अटंती आम विद्यालय रे 12 जन शिक्षक अछंती मु भाई प्रतिदिन 2 ग्लास क्षीर पियंती बाघर 4टी गोड़ और गोटे लांज थाए याकू ट्रांसलेशन करिवो बहुत इजी एथिरे तमरो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जोटी यूज करिवार अछि यूज करिवो जोटी प्लुरल काउंटेबल नाउन ता आगरे वर्ब केंती लगेबो सेटा मध्ये भाबिबो कोठी आर लगेबो कोठी इच लगेबो तारो इम्प्लीमेंटेशन अछि एप्लीकेशन एटी अछि डियर स्टूडेंट ओके नाउन सहित वर्ब को तम माने लगेबो सो डियर स्टूडेंट आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्लास माइट हैव fruitful for you have understood the concept I think so तम माने ताकू रिवाइज करो जहां भी किसी नोट डाउन करो thank you very much for participating in my class so thank you very much thank you have a nice day